Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed exercise 6.1. Now today we will start from the next, that is operations of an integer. In the addition of integers, operations क्या होते हैं? Addition, subtraction, multiplications and divisions. These are the operation of integers. First one is that is addition of integers. In the previous chapter, we have learned how to add two whole numbers on the number line. Since each whole number is either a positive or zero, we can add two integers by the same method if they are positive of 0. But if both of the integers or one of them is negative, then what happens? Can we use the rules of whole numbers to add such integers? In this section, using number line, we shall extend the method of addition of whole number to the addition of integers. We shall keep in mind that adding a positive integers mean moving to right and adding a negative integers. क्या होता है addition of integers? इसमें क्या होता है जो zero है, if they are a positive or zero, जो दोनों integers होंगे, both integers और one of them is negative, तो क्या होगा? तो shall we extend the method of addition of whole number to the addition of integer? तो हम क्या दिमाग में रखेंगे कि जो पॉजिटिव इंटीजर है जब वो मूव करेगा राइट एंड एडिंग टू द नेगेटिव इंटीजर तो वो मूव करेगा लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन. We shall discuss the addition of integers under the following cases. First one is both the integers are positive and both the integers are negative. Right? फर्स्ट वन बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव. अब इसमें क्या है, दोनों इंटीजर्स जो है पॉजिटिव है, 4 और 7. तो 0 to 4 एंड 4 to 7. 7 मूव किया है 4 से, 1 2 3 4 5 6 7, 0 4 से मूव किया है. वी स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड मूव 7 steps to the right. We jump 7 steps to the right of 4 to reach at 11. Now, तो आपको समझ आया, 0 to 2 4 और 4 to 7 जंप करना है. राइट, बोथ द इंटीजर्स आर नेगेटिव. लेट अस ऐड -3 एंड -6. तो 0 to -3. अब 6 हमें मूव करना है, 1 2 3 4 5 6. तो हमारा आंसर क्या आया? -9. नाउ वन ऑफ द टू इंटीजर्स इज नेगेटिव. अगर हमारा कोई भी एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, अगर दोनों नेगेटिव हो तो ऐसे करना है नंबर लाइन पे. अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 0 to 6, देन 6 to -5 चलेंगे, 1 2 3 4 5. 0 to 6 तो गया, बट हमने रिवर्स क्या लिया? -5, 1 2 3 4 5. ओके, तो हमने 6 से 5 स्टेप मूव किया टू रीच एट दी 1. Now, in view of the above, we have the following rules for the addition of two integers. अब कुछ रूल है कुछ integers को ऐड करने के. रूल नंबर 1, the sum of two positive integer is sum of their absolute value and give the sum positive sign. अगर टू पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो हमारा जो सम आएगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा. राइट, the sum of two negative integers is sum of their absolute value with negative sign attached to it. अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स है वो होंगे तो ऐड, बट उनके सामने साइन किसका यूज होगा? नेगेटिव का. नेक्स्ट, टू ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इंटीजर we find the difference between their absolute value and give the sign of integer with the larger value to it. अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उसका क्या होगा? प्लस माइनस इट विल बी माइनस. राइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे एडिशन की. फर्स्ट वन इज दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. The sum of two integers is always an integer. अगर दो इंटीजर्स है तो उनका जो सम होगा वो भी क्या होगा? इंटीजर होगा.
In other words, if a and b are two integer, then their sum a plus b is also an integer. अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है तो उनका आंसर भी क्या होगा? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर. नेक्स्ट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल 3 plus 6 it will be 9. तो 9 क्या है? एक इंटीजर है. नेक्स्ट, -4 and -7, they both are minus minus plus, plus plus it will be plus. तो हमने साइन माइनस का क्यों यूज किया है? बिकॉज एज कंपेयर टू 4 and 7 विच वन इज ग्रेटर, जो उसके सामने साइन है हम वो यूज करेंगे. राइट. नेक्स्ट, 6 पॉजिटिव का है और -10, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो गया? -4. -4 इज एन ऑल्सो एन इंटीजर. Next, 19 plus -12 plus minus minus 7 is an integer. Now move to the next, that is property 2, commutative of addition. The sum of two integers in any order remains unchanged. That is why the addition of integers is commutative. In other words, if a and b are two integers, तो इज इक्वल टू दी बी प्लस ए. तो वो किसके इक्वल होगा? बी प्लस ए के. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस सिचुएशन को रिवर्स भी कर दूं बट आंसर विल बी सेम. 6 प्लस -9 इज इक्वल टू -3. अब मैं अगर इसको रिवर्स भी कर दूं, -9 प्लस 6 इज इक्वल टू -3. नेक्स्ट वन, 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20. 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 20. That is known as commutative of addition. Now third property, that is associativity of addition. इसमें क्या होगा कि दो नंबर से ज्यादा का सम हो, that is known as associativity of addition. The sum of any two or more integers remain the same irrespective of the way in which they are grouped. In other words, the addition of two integer is associative, right? For example, a plus b plus c. तो ये क्या हो गया? Is equals to the a plus b plus c. तो हमने इनको क्या किया? एसोसिएट किया है और दो से ज्यादा डिजिट्स को और इंटीजर्स को यूज किए हैं. राइट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी 4, identity element for addition. If 0 is added to any integer, the sum is equals to the integer also. अगर हम कोई भी नंबर को ऐड करेंगे 0 से, it will be same number, कोई भी नंबर. For example, 6 plus 0, it will be 6. 0 plus -7, answer will be -7. Now next property, that is additive inverse for addition. Now move to the next property, that is additive inverse for addition. The sum of an integer and its opposite is equals to 0. In other words, a क्या है? एक इंटीजर है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव नंबर है, बट बोथ द नंबर्स आर सेम, देन इट विल बी कैंसल आउट विथ 0. राइट. अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है बट बोथ द नंबर्स आर सेम, देन इट विल बी 0. फॉर एग्जाम्पल, प्लस का 5 और नेगेटिव का 5, तो ये क्या हुआ? नंबर्स दोनों सेम है बट एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0. नेक्स्ट वन, -24 एंड पॉजिटिव का 24, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 0. Right. Now move to the next, that is if a, b and c are integers, then a plus b and b plus c. Now move to the next, that is successor or predecessor of an integer. If a is an integer, then a plus 1 is also an integer and it's called the successor of a. अगर मैं पूछूं what is the successor of 0, it will be -1. 5 का 5 is the successor of 4. -3 is the successor of -4. नेगेटिव में जितना
नंबर छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा. नेक्स्ट, the next one is that is predecessor of an integer. If a is an integer, then a minus 1 is also an integer. It is known as predecessor, right? So minus 19, we have to do increment in predecessor and we have to decrement in successor. I repeat it again. We have to do decrement in successor and we have to do increment in predecessor. माइनस 19 का क्या हो जाएगा? माइनस 20. 0 is minus 1 and predecessor is 6 is 5. Okay students, in our next video we will start from the solved examples. That's all for today. Thank you class.